Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. We are going through chapter 4 stoichiometry and today's topic of discussion is chemical equations and chemical reactions, and we will understand these through some examples. Let's start the topic the chemical equations and chemical reactions. First of all, we will discuss what is chemical equation. It is basically the symbolic representation of the chemical change between the reactants and the products, that how the reactants are being changed into the products without even a minimum change in the mass ratio of the reactants. It means जितनी अमाउंट रिएक्टेंट्स में मौजूद है उतनी ही अमाउंट का प्रोडक्ट बनेगा, उनकी अमाउंट्स में कोई चेंज नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल, इफ़ 10 ग्राम ऑफ रिएक्टेंट्स आर बीइंग यूज्ड देन 10 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड. यानी ये नहीं होगा कि अगर 10 ग्राम रिएक्टेंट्स का यूज़ किया तो 8 ग्राम प्रोडक्ट बन रहा है, या 10 ग्राम रिएक्टेंट यूज़ किया तो 12 ग्राम प्रोडक्ट बन रहा है. अगर 10 ग्राम रिएक्टेंट यूज़ किया गया तो 10 ग्राम ही प्रोडक्ट बनेगा. इस रेशो में कोई चेंज नहीं आएगी. अगर कोई चेंज आ रही है तो वो सिर्फ एटम्स की अरेंजमेंट में आ रही है, और इसी को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन, जिसमें हम एलिमेंट्स के सिंबल्स को यूज़ करते हैं, उनके फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, और जो मेजर चीज़ हम नोटिस करते हैं वो ये करते हैं कि क्या एलिमेंट्स की अमाउंट सेम है, जितनी अमाउंट का रिएक्टेंट यूज़ हुआ है क्या उतनी ही अमाउंट का प्रोडक्ट बना है या नहीं बना है. So, in the chemical reaction, there are the two terms being used, reactants and the products. Reactants are the starting materials that are being reacted, and the product are the substances that are being produced. Reactants are being written on the left side, and the products are being written on the right side. And the final main term that is used is the arrow. Now here we will discuss the concept of the type of reactions that are being reversible and irreversible. Reversible reactions are those in which the reactants are converted into the products, and as a result products can be converted back into the reactant. But irreversible reactants are those in which the reactant are converted into the products, but products can never be converted back into the reactants. Reversible reactions are two-sided, and the irreversible reactions are the one-sided reactions. And if we talk about the arrow, right arrow, that it separates the reactants from the products and indicates the direction of the change, that it moves from the left to the right side. And in the case of the reversible reactions, two arrows are used, and they are half-headed arrows, which means the reaction can be proceeded from reactants to products and back from products to the reactants. Now move towards the rules for writing the correct equations. To be scientifically accurate, these main 5 rules must be followed while writing the equations. Number 1 is the law of conservation of mass. Equations must be balanced. For example, if 10 gram of reactants are used, then 10 gram of products must be produced. No atoms are created nor destroyed. यानी जितनी अमाउंट रिएक्टेंट में इस्तेमाल की जा रही है उतनी ही अमाउंट का प्रोडक्ट बनना चाहिए, ना तो ज़्यादा ना तो कम. The number of atoms of each element must be equal on each side. यानी अगर रिएक्टेंट में कार्बन के 2 एटम मौजूद हैं तो प्रोडक्ट में भी 2 एटम मौजूद होने चाहिए. ठीक है, यानी इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड. Number 2 is the chemical formulas. We should know the correct symbols and chemical formulas of the atoms, molecules and compounds. Number 3 is the mole ratio. The equation must show the correct proportion of the reactants and products. यानी केमिकल फार्मूलाज हमारे बिल्कुल ठीक होने चाहिए, उनके दरमियान की जो मैस रेशो है वो हमेशा सही होनी चाहिए. अगर वो रेशो ठीक नहीं है यानी हमारा प्रोडक्ट भी ठीक नहीं है और हमने फॉर्मूला भी ठीक नहीं लिखा है. नंबर 4 इज़ द डायरेक्शन. उसके लिए हमने एरो को देखना है, आया हमारा रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है. अगर तो हमारा रिएक्शन इरिवर्सिबल है, इट मस्ट बी फॉलोज फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू द राइट हैंड साइड. यानी रिएक्टर से प्रोडक्ट की तरफ एरो इंडिकेट करेगा रिएक्शन की डायरेक्शन. एंड फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन इट मस्ट बी टू साइडेड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. And the double arrow indicates that the reaction can be proceeded from reactants to products and from products to the reactants. Number 5 is use the subscripts to show the state of the matter. यानी अब हमने बताना है कि हमारा जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसकी स्टेट क्या है, मैटर की कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, और जिन सिंबल से हम उनको रिप्रेजेंट करेंगे वो हमेशा एटम, मॉलिक्यूल या कंपाउंड के सबस्क्रिप्ट में लिखी जाएगी. फॉर एग्जांपल, इफ़ इट इज़ इन सॉलिड स्टेट इट विल बी रिटन इन स्मॉल एस,
If it is in liquid, it is written in the small l. If the state of the matter of the reactant or the product is gas, then it will be written in the small g. And if it is in aqueous state, then it will be written in aqueous, yani AQ. Okay, and all the subscripts are written in the brackets. Now here are some types of reactions, and we will discuss it with examples. Number one is the irreversible, and it moves only from left to right in only one direction. And the example is of zinc and H2SO4. Zinc reacted with H2SO4, and in return the product is ZnSO4, is zinc sulfate and hydrogen gas, and the amount of the reactants and products are same. Number two is reversible, that moves from left to right and from right to left, that it is a two-sided reaction. And the example is of ammonia formation. Nitrogen reacts with hydrogen and gives the 2 moles of ammonia, and the amount of all the atoms in reactants and products is same. Number 3 is the ionic reaction, the reaction involving the ions in water, that is, it is an aqueous solution. If a product is insoluble, it forms a precipitate, which means अगर कोई भी प्रोडक्ट जो बन रहा है उसने रिएक्ट नहीं किया है, वो रिमेनिंग प्रपोर्शन है, लेकिन इक्वेशन पूरी बैलेंस्ड है, ठीक है, जितनी अमाउंट रिएक्टेंट्स की है उतनी ही प्रोडक्ट्स की है, लेकिन जो बकाया बच रहा है उसको हमने प्रेसिपिटेट कह दी. एग्जाम्पल इज ऑफ AgNO3 and NaCl, and it gives the AgCl, sodium ion and nitrate ion, and here AgCl is the precipitate, it is the main product that is being formed. Now we will discuss the sample example. The sample example is aluminium metal reacts with oxygen to produce aluminium oxide. How many grams of oxygen will be required to react completely with 0.3 moles of aluminium? And in the given data, we have 0.3 moles of aluminium. If we see the balanced chemical equation, 4 atoms of aluminium reacted with 6 atoms of oxygen, and in the products, same amount of atoms are being produced. So, by using the unitary method, if 4 moles of aluminium from the balanced chemical equation needed the 3 moles of oxygen, then 1 mole of aluminium will need 3 by 4 moles of oxygen. And as we have in the given data 0.3 moles of oxygen of aluminium, then oxygen will form 0.225 moles. Okay, now again by using the unitary method, 1 mole of oxygen has molar mass 32 grams, and if we have 0.225 moles of oxygen, the molar mass will become 32 into 0.225 by using the formula N is equal to M over molar mass. Here we have the number of moles, then by changing the formula we will have the molar mass of oxygen. So by doing the calculations, for the 3 moles of aluminium, 7.2 grams of oxygen is being needed. That's for the today's lecture. Thank you.